Hi students, how are you? Now this is a non-profit organization chapter. Now today we are going to be solve the question number 6, page number 117. From the following particularly relating to Radha Krishna Charitable Hospital. Today's NGO name is Radha Krishnan Charitable Hospital Pune. Means it is a address of Pune where one non-profit organization is there. The organization name is NGO name is Radha Krishna Charitable Hospital. Prepare income expenditure and balance sheet. Now today we have draw the line income expenditure and balance sheet. See student, first of all, when you are making the column, when you are drawing the column, at that time you should be very clear of all the concept of how we are making the columns. That means what? That means if you are doing like the income and expenditure account, in before that you can write in the books of. So you can write in the books of Radha Krishna Charitable Hospital in the up, and then after my board size is less, that's why I'm telling you some orally what the instruction should be followed by the students while the solving the NGO. So now first of all, I'm trying to say that Radha Krishna Charitable Hospital. This is a NGO, and you can write in the books of Radha Krishna Charitable Hospital, Pune. First in the books of. Second line you can write income expenditure account for the ended. Whatever the receipt payment date is given, at the same date you can write 31st March 2030, 31st March 2020, and then after balance sheet as on you can write here also 31st March 2020. Then you can write here expenditure rupees, and income rupees, balance sheet you know very well, liability rupees, asset rupees. These all the things column you can up to date with proper manner. And in one page income expenditure and second page balance sheet. Now first of all it is given two balance brought down of cash 8230, 8,230. We are not writing this amount anywhere because this is the last year's cash. So two subscription 52,000. We can write here subscription, that is the income by subscription is 52,000. See, you know that we have the adjustment of subscription. So adjustment number 1 and 2. There is a first and second adjustment. It is given in a additional information and given in the column sequence. So we can write 52,000 subscription, and we can left 5 to 6 lines because we have to add a less over there in our income expenditure account. So that means we can leave donation journal is given. So we can write by donation here. General means it is for income for the NGO. That means Radha Krishna Charitable Hospital 17,500. We can write here 70,500. There is no any adjustment of donation is given. No. Then after interest on investment, we can put here it is income for the NGO. Investment is 10,000. We can write here 10,000. Whatever the information you can write, you can get the half of mark of everyone. Then proceed from charity show. You can write by proceed for charity show. We can write full of this, that 8530. This is we have completed receipt side posting. Now come to the payment side. Medicine purchase. See, medicine purchase, but it is given opening and closing stock of medicine. Whenever the stock word is given of any expenditure, that time you have to do one format. जब भी किसी एक्सपेंडिचर का स्टॉक दिया रहेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो एक फॉर्मेट है वो वहाँ पे लिखना चाहिए टू मेडिसिन अंडरलाइन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक. Then you can get the actual stock of the medicine. Then opening stock, it is given in your problem. Adjustment number 3, it's 8,000. You can write here 8,000 and 41,000. This posting of this right now we have calculated for the payment side. Now it is
simply in on the way, so we can write the closing stock also 11,000. So 41,000 plus 8,000 is 49,000, and 11,000 we can minus. How much it will come? 49,000 plus 10 minus 10, 39,000. 38,000 actual expenditure will come. And this is the first effect. And second effect right here, closing stock of medicine. Where we are at in balance sheet asset side. How much it is? 11,000. So now simultaneously posting of the receipt payment, we did the third adjustment because it is a link of all the information. So सब information साथ में जैसे वो third adjustment हमने पहले solve कर दिया. So now general expenses you know very well. It is come to the receipt income expenditure. Expenditure size 1050. And then after salary 23,500. So now salary 23,500, it is no any adjustment. So we can write to salary 23,500. And then after stationery 2,000, we can write to stationery 2,000. Expenses of charity show 550, we can write to expenses of charity show. These all the expenditure, one effect only come to the income expenditure, and that will be all the payment related to the expenditure will come to the expenditure side. That means income expenditure debit side. Surgery and dispensary expenses. This also comes here. Surgery and dispensary expenses. All the things will come to here. 4,200. Equipment asset side. And equipment is how much it is given? 10,000. We can write 10,000 here. So we have made all the posting of receipt and payment, cash in and cash at bank. It will come here 960 asset side and 13,000. That means cash in hand and cash at bank. See, you can where the posting is term, you कहाँ कौन सा posting आएगा वो आपको पता होना चाहिए. कैश इन एंड कैश एट बैंक जो कि पेमेंट साइड में होता है, उसका जो पोस्टिंग है वो एसेट साइड में बैलेंस शीट है एसेट साइड में आएगा जो करंट ईयर का है. Now all the posting of receipt payment we did now. Now come to the point of additional information. The first adjustment is very IP adjustment. Subscription I know very well, and you also know very well. Subscription means one kind of membership money which is given by the public to the NGO. So that means 310 it is given. Subscription due. Due means outstanding. बाकी है, देना बाकी है. तो 310 रुपये बाकी हो जो लास्ट ईयर का बाकी था. तो we can write here outstanding subscription for last year. लास्ट ईयर का रहेगा तो माइनस हो जाएगा. तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 310. जब हम इसमें माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 8 या 9 इधर बचा 10 में से 8 या 9, 9 में से 3 या 6 1 5 51,690. Once again we can then cross it whether it is minus calculation is right or wrong, just check it out. 0 0 9 1 10 6 3 9 10 8 2 बराबर है. Then plus outstanding subscription for current year. Current year का रहेगा तो plus होगा. Then add how much is given here now. Plus outstanding subscription is given 350. So we can add 350 here. 095 4 1 6 3 9 0 1 2 5. फिर ये सब एडजस्टमेंट जो मैंने पोस्टिंग पहले भी किया, थोड़ा मैं रफ करूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है.
and then माइनस 52 का उसके बाद एडवांस कुछ दिया हुआ है, तो करंट ईयर एडवांस है तो वो माइनस होगा, लास्ट ईयर का तो प्लस होगा। तो ना लास्ट ईयर का 600 है, सो इट इज प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर एल वाई मीन्स लास्ट ईयर, हाउ मच इट इज 600, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो देन 0 4 6 2 5, और करेंट ईयर का एडवांस जो रहेगा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, ये लास्ट ईयर है और ये करेंट ईयर है, इट इज़ अ लेस। करंट ईयर का जो होता है हमेशा लेस होता है 150 रुपये, ये 150 लेस हो जाएगा। जब इसको 150 लेस करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट आएगा 0, 4 में से 5 जाता नहीं, 14 में से 5 गया 9, 6 में से नहीं जाएगा, 5 में से गया 4, 2 5, 52490 इज अ राइट एक्चुअल आंसर विल कम टू द आउटर कॉलम। अब आ जाओ ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट और इफेक्ट यहाँ पे आएगा नहीं। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का दिया है 350, ये आएगा एसेट साइड में, राइट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना दिया है 350, और 350 आपको यहाँ लिखना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आएगा नहीं, करंट ईयर का आएगा। तो करंट ईयर का जो अपना सब्सक्रिप्शन है एडवांस माइनस करते हैं, वो आपके यहाँ पे आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जो आपने माइनस किया है वो वैल्यू आएगी 150। तो ऐसे दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। स्टॉक मेडिसिन मैंने पहले ही कर दिया। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000 दिया हुआ है, तो 15,000 अगर इक्विपमेंट है और लास्ट टाइम इक्विपमेंट इतना 10,000 था, तो टोटल इक्विपमेंट 25,000 हो जाएगा। कैसे शो करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं कैश एडमेंट कैश इन पोस्टिंग हो चुका है, मैं इसको रफ करता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, ब्लैक बोर्ड छोटा है इसके लिए स्मॉल साइज है ना। यहाँ पे आएगा पहले इक्विपमेंट लास्ट ईयर का कितना था, कैसे मालूम था लास्ट ईयर का, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया है 15,000, 15,000 इट्स लास्ट ईयर्स फिगर एंड प्लस परचेज दिस सर कितना दिया परचेज, पेमेंट में आपको दिया है 10,000, तो 15 और 10 कितना हो गया 25, 25,000 बोथ आर कंप्लीटेड। और एडजस्टमेंट बिल्डिंग के बारे में दिया है 40,000 और इक्विपमेंट में भी दिया है 1,900। तो आपको ये 25,000 आउटर बना के अंदर लिखना है और उसमें माइनस डिप्रिसिएशन लिखना है ऑन इक्विपमेंट। और ये जो 1,900 दिया हुआ है 1,900 वो आपको इसमें माइनस हो जाएगा। 25,000 माइनस 1,000, 24,000, 24,000 माइनस 900, इट्स 23,100। Calculation should be fast, and this second effect will come to the balance sheet income expenditure side to depreciation on equipment, and it will come how much 1,900. One more adjustment is of building and 10% investment. Two effects are there. So now we can just going to be rough in front way. एसेट साइड तो मैं माइनस करता हूँ, और यहाँ पे अगर हम लोग बिल्डिंग लिखते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल्डिंग अमाउंट इज 40,000, वी कैन राइट 40,000 हियर एंड लेस डिप्रिसिएशन। now depreciation how much it is given 1,500, so we can write 1,500 here. 40,000 minus 1,000, 39,000, 39,000 minus 500, 38,500. And then second effect will come here to depreciation on building. Depreciation on building. Income expenditure side. 1,500 we can write. It is given after this table, page number 118. 10% investment it is given, that we can write 10% investment.
how much it is given? 1 lakh. See, usually 1 lakh it is be right, and plus interest on investment. It's 10,000 will come. Overall 1 lakh 10,000 will come. And this second effect, this is a hidden adjustment. It is given in percentage. This second effect already we have written in income side of interest on investment. It is already given in the problem. So I have covered all this adjustments and this all posting. You have to write and send the image and try to must the tally. टैली कैसे करना है? आपका इनकम का जो भी टोटल है और एक्सपेंडिचर जो भी टोटल आता है उसमें से माइनस करो. 15,820 राइट आंसर है, वो आपको आएगा. ये सरप्लस आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है और देन आफ्टर विल गेट द टैली ऑफ बैलेंस शीट. सो ऑलमोस्ट अगर 15 मार्क का ये प्रॉब्लम है तो आपको मैंने 12 to 13 मार्क्स का मैंने आपको आज बता दिया. यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सेंड द इमेज एंड राइट योर प्रॉपर रोल नंबर ऑफ 11th विथ योर नेम and standard and division for your attendance. Please stay at home. And about 12th 12वीं के फीस भरने का जो भी कोई नोटिस आया नहीं है, जैसे कुछ नोटिस आएगा ऑनलाइन है या ऑफलाइन है कि बैंक में जाके भरना है, we all the give the information. So please stay at home, do study and waiting for my next lecture. Thank you.